collapsed. The recording was started. Chat messages are also tab, admit button, enter. Dear learners, welcome to today's session. So today is the sixth class. So sir is going to present today block 6 of ESO 14. So I must welcome to all of the learners and also I welcome to Dr. Manas. No doubt he is taking a lot of pain to taught about the social stratification. So I do feel definitely you are enjoying the class, but our putting lot of efforts, the student enrollment is not increasing. I don't know why. What is the reason? The student maybe they feel that they knows everything, so they don't require any kind of class. But due to this pandemic, you all are shut down in the home. So I pray to God you all should stay safe and stay home. So now again, government is going to start shutdown. So you are bound to stay home. You cannot go out. So now the corona is spreading like anything. So whatever the reason, so this corona also taught us one thing. This online counseling class. Everybody is giving the putting importance to all of us. So the face-to-face interaction is putting a lot of importance in any kind of systems. But now the opening the study center is difficult. It's not possible to open the study center. So you believe that our learners should not feel distant. So because of that reason, you are just bridging the gap. We had planned that we will start our online counseling classes. So true sense that the ignos objectives reaching to the doors of the learners, it's possible because you are not telling that the student should come to us. So now you are trying to reach to the learners home and you are trying to solve all kinds of problem, what are the problems our learners are facing. With these words I just conclude my deliberation. So once again I welcome to Manos sir. So you can continue your deliberation of today's session. Welcome you, sir. Thanks. Okay. So, good evening to all dear learners. So, today we'll start block 6. Okay. So, yesterday also we have discussed about many topics. Okay, we cover many topics. For example, we discuss about caste system in India. What are the features of caste system in India? Then we discuss about the weaker sections. Okay, in the block 6, who are the weaker sections? What are the problems of weaker sections? ସେମାନଙ୍କ problems କ'ଣ ଅଛି? And what are the solutions of weaker sections? And who are the weaker sections? Who are the commander? Yes. सर जो ESO 11 ର ରେକର୍ଡିଂ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନି? Yes. ଆପଣ ESO 14 ର ରେକର୍ଡିଂ ବି ଦିଆ ଯାଉଛି। ESO 14 ର ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି। ଆସୁନି WhatsApp ରେ ଆରେ ଆସୁନି ଆପଣ ତ? ମାନେ ESO 14 ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଆପଣ ESO 14 କ୍ଲାସ କରୁ, ଆପଣ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି? ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କରିଛୁ ଇଗ୍ନୋ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓକେ? ଆପଣ ESO 14 ଗ୍ରୁପ ରେ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ESO 11 ରେ ଅଛି। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। आमर गोटे चैनल अच्छी इग्नो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर यूट्यूब, ओके? सेइथरे में अपलोड करछु, सेइथरे आपण देखि परिबे, ओके? आज्ञा। कंटिन्यू। Okay. Okay. So yesterday we discussed about many things. Okay. So we discussed about who are the marginalized groups. So same thing will continue today, and also we will touch other parts of our syllabus, social stratification. So yesterday we discussed about marginalized groups. Who are the marginalized groups? Marginalized group किए को माने आदरे include होचंदी बा काहे कि हमें तांको weaker section बा marginalized group कहूचे। तो एइथପାଇଁ कहूचे ना because they are socio economically politically they are weaker. For that reason we call them weaker section or marginalized groups. So in marginalized groups किए आछुचंदी ना Dalits आछुचंदी, scheduled caste, scheduled tribes, women's, children's. So they come under this weaker section or marginalized groups. So आमे scheduled caste रो आमे discussion करथिले that who are the tribes, what are the problems of tribes. आमे जेमति discussion करथिले problems, for example जेमति कि first होची development induced displacement. The major problem होची displacement. Next problem is what related to health problems, then education. Okay,
Then we discuss about their lack of awareness regarding the development programs, means infrastructure development programs विषय में discussion करथिले. Then we discuss about some solutions from the point of view of sociological explanation and from the point of view of governmental initiatives. Okay, so from the point of view of social explanation, we discuss about Risley, that how he explained that how to protect the tribes, how to protect this marginalized group. Now it is possible through isolation, integration, and accommodation. So these three are the sociological methods to protect the rights of the tribes. Okay. So seମିତି ଆମେ governmental initiative देखले, there are many provisions are there, many articles are there. We have fundamental rights. So through that also, or through different schemes specific to for tribal welfare, ସେଇଟା ବି ଆମେ discussion କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି tribal ମାନେ କେମିତି ମାନେ welfare Sir, measures ରେ yes, sir, can you explain one more time accommodation? yeah, I will tell. Okay. Yes. So accommodation means what? Now in sociology there is a topic, social processes. Okay, the social processes, in that there are many. There is associative processes and dissociative processes, means positive processes and negative processes are there. So accommodation means what? Now accommodation is a process which happened after the conflict. Generally, there are many terms like, for example, cooperation, competition, conflict, assimilation. Similarly, another term is accommodation. So accommodation means what? For examples, if there is some conflict, for examples, always there is a conflict between earlier classes. I discussed that how there is a conflict in class. Why? Now, because they are deprived. So, but after that, after the conflict, there is a resolution or there is a solutions. So similarly, accommodation means what? Now these terms are related to culture. If there is two cultural class between two each other, okay, when there is a conflict between two cultures or two groups, but there are some settlements. So accommodation means simple terms. In some simple terms, it is adjustment. Okay, so cultural adjustment. So we Sir, have to, yes. sir, adjustment of ST with the mainstream. What? Adjustment of scheduled tribes with the mainstream. Yeah, mainstream. So mainstreams, their culture is different and tribal culture is different. Earlier classes I have discussed about that how ethnicity means what? Na cultural differences. So similarly, this tribal people culture is totally different from the mainstream people. So when there is a class or conflict between two classes, okay, means two classes means these two groups. Okay, Yes. okay. So there is conflict, but after that they settle down, means they adjust with the situations. So Yes. if you see nowadays, so tribal people also part of our mainstream. It is because of these accommodations. Means first there is a conflict, there is a struggle, then there is settlement or adjustment. So that is known as accommodation. Are you clear? Yes, sir. Okay. So we discuss about many things. For example, like we discuss about scheduled tribes, okay, their problems and some solutions. Then we discuss about Dalits. Okay, so who are Dalit? Now Dalit are the part of the lower sections of our hierarchy. Okay. Yesterday also I use some concepts. I clear about some concepts. For examples like hierarchy means top to bottom hierarchy. So caste system is also like same thing. Okay. So we discuss about hierarchy, then purity and pollutions. We discuss about some approaches like some approaches of M.N. Srinivas, Sanskritisms, then G.S. Ghure, that how G.S. Ghure describe about tribes. Then we discuss about Louis Dumo. Okay, Louis Dumo discuss about hierarchy or purity and pollutions. So we discuss about this about Dalits. Okay. So why they are called weaker section or marginalized group, or why they are called Dalits? Because they are exploited. Who are the Dalits? Now those who are exploited by the society.
or by the systems. So they are known as the marginalized group or Dalits. So in that we discuss about who are the Dalits, then discuss about the problems of Dalits, how they are exploited, how they are deprived, okay, how they are deprived from our welfare schemes, okay, how they are deprived from the basic facilities of the societies. ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ they are not allowed to enter into the temple, they are not allowed to use the public well or ponds. So in this way they are exploited, and also they are not allowed to take education, higher education, or they are not allowed to read Veda. तो ସେମାନଙ୍କୁ ପଢିବାର ବି ଅଧିକାର ନଥିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା. So in this way they are exploited. And another important thing is what na occupational restrictions. So there is restrictions in occupation. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି caste system is a very rigid system, ଆଉ caste system is a closed system, so there is no possibility of mobility. तो mobility ର possibility ନାହିଁ ସେଠି, movement ର. जे जो caste ରେ ଅଛି ସେ that is fixed, Sir, totally fixed. Yes. so one more doubt is there. Yeah, tell me. Sir, in Varna system, there was no Dalits. Then Ye- where does this Dalit come? Yeah. If you attend my earlier classes, I explain about that how caste system is originated. Okay. Yes, sir. So yeah, caste system is originated in later Vedic age. If you discuss about history, so there is the Vedic age is divided into early Vedic age and later Vedic age. So in early Vedic age, the caste Varna system started on the basis of the theory of divine origin. Means how different castes are born from different part of the god. I'm just କହିପାରିବା. So from that it's originated. So in Varna system and caste system, what is the difference? Now Varna system there is no untouchability or Dalit concept. Only four castes are there: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. On the basis of occupation and means if you think about from divine theory, it's based on color and occupation. So Varna system is achievement status. Earlier I discussed that how that caste system is ascribed status, means we occupy a status in the society on the basis of birth, but class system is basis on the achievement. So Varna system means what? Now in Varna system, it is based on achievement. So on the basis of achievement, we can occupy a status or we occupy a specific caste. So there is no untouchability, there is no Dalit. But when society became complex, okay. So when society complex in later Vedic age, so this caste system started. So not only four castes, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but also another caste like untouchability, subcastes. So for that reason, now in India we have more than 6,000 castes are there. So this is the only difference. So in Varna system there is no untouchability, but in caste system there is Dalit untouchability started. Are you clear? Yes, yes sir. Okay. Okay. So we discuss about Dalits. We discuss about their problems. Okay. How what are the problems of Dalit? How they are exploited by this society? It is because of the status. When we discuss about stratification, ଆମେ ଯେତେବେଳେ stratification discussion କରୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ status term ଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛେ। ତ ଗୋଟେ ଲୋକର status ସେତେବେଳେ ହିଁ change ହବ ଯେତେବେଳେ ତାର socio economic political rights ସେ ପାଇବ। ତ for that reason ଆମେ ଯେତେବେଳେ discussion କରୁଥିଲେ ଯୋଉ marginalized groups ବା ଦଳିତ, ତ ତାଙ୍କର problems କେମିତି solve ହେଲା? By two methods, either through their own effort, ଯେମିତି ଆମେ movement discussion କରିଥିଲେ ସବୁ, socio religious movement, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଆର୍ୟ ସମାଜ, self respect movement ହଉ, ଆମେ ଯେତେ movement କରିଥିଲେ, that is through their own effort। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନା through government effort, okay, through constitutional provisions। ଯେମିତି ଆମେ discussion କରିଥିଲେ, there are many provisions for safeguarding the rights of the Dalits or the tribes। तो एटा हम डिस्कशन करथिले, बहुत सारा आर्टिकल्स अछि हमर, बहुत सारा प्रोविजंस अछि, सेति में हम ता कहूचे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, बट हम ता कहूचे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, नॉट टू प्रोटेक्ट
the rights of some section of people. तो किछि सेक्शन को पीपल को राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करबा पई हमें डिस्क्रिमिनेट करूछु. ओके, तो से फॉर एग्जांपल मु जेमिति कहथली रिजर्वेशन हो एजुकेशन रे हो कि गवर्नमेंट सेक्टर रे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे हो, जो हम जो रिजर्वेशन टा रखु जे कोन पे, एंड दिस इज ओनली टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. Okay, because they are marginalized group. Okay, means their number is few, so they are suppressed, deprived. जेमती classes रे भी मु कहथली relative deprivation, so they are deprived from their rights. So when they feel deprived, obviously they come under this weaker section or marginalized group. तो हमें scheduled caste, scheduled tribes. So scheduled tribes रे भी हमें discussion करथिले जेमती सब problems सब what are the major problems of these weaker sections or marginalized groups. हमें discussion होले displacement, health problem, education, so infrastructural development हो सेडा study करथिले. तो solution में हमें discussion करले. Similarly, so we discuss about Dalit मानन को भी problems हमें discussion करथिले. Okay, so what are the major problems of Dalit? Na major problem of Dalit is what? Na deprivation and exploitation. These two things. Deprivation means what? Now they are deprived from their own rights. So all are human beings, but still they are deprived from their own rights because of the low strata. Stratification means strata means layer. So because of low strata, they are deprived from their own rights. Another is exploitation. So because of their low strata, so they are exploited by the higher group. मुझे कहले hierarchy. So caste system is based on hierarchy. So because of this hierarchy, because of this discriminations, so they are also exploited. तो ସେମାନେ exploitation भी होउचंदी, deprive भी होउचंदी. जेमती alienation सेमती deprive भी होउचंदी. So these two are the major problem, major cause, border cause of this Dalit problems. Okay. So another problem हम जो देखिए discussion करेगा गले कौन? Casteism. So India is a caste-ridden society. So caste system is playing major role in society. Okay. तो सेही में जो casteism बा caste feeling हो बा caste politics हो playing an important role in this. So the more previously discussion सोशियोलॉजी रो इमर्जेंस एथि पे थिला ना प्रॉब्लम थिला अथवा सॉल्यूशन थिला इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. सिमिलरली कास्टिज्म हो बा कास्ट सिस्टम हो बा दलित प्रॉब्लम हो तो तार सब रो सॉल्यूशंस अछि. तो से हमें दलित रे हमें सॉल्यूशन जेमदी ट्राइब्स रे डिस्कशन करथले हम दलित रे भी अछि. दलित पे जेमदी मूवमेंट स्टार्ट हेतला. ओके, सो दलित कर मेन प्रॉब्लम कोन थिला ना मेन प्रॉब्लम थिला एजुकेशन. द बेस्ट first thing is education. So for education, yesterday class में discussion करती many social reformists like Raja Rammohn Rai, Dayanand Saraswati. Okay, so they started movement for the upliftment of Dalit. Even Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, they also started different movements. We discussed about Mahar movement, Brahma Samaj, Arya Samaj. Okay, for what? In every movement there is main concept is what? It's education, promotion of education. So education through रे ही गोटे status को हमें enhance करि परिबे. जेमिति मु कहली caste system रे we occupy status. हमें गोटे status occupy करछे because of our birth. हमें जेतु गोटे caste रे जन्म नै छी हमें से अनुसार ही से caste रे status टा पाउछे. But education is not ascribed. Education is achievement. So through achievement, for example, I am not a Brahmin, but still I am a teacher. It is because of my education. It is because of my achievement. So now there is no restriction on occupation. So to enhance the status of a particular caste or class, education is must. So through education we can change our status. So education द्वारा हमें हम status को change करि परिबे. तो सेही जिंस ही
आमे जो दलित अपलिपमेंट देखिले बा वीकर सेक्शन कर अपलिपमेंट देखिले तादर एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करथिला तो यस्टरडे क्लास रे भी आमे डिस्कशन करथिले मार्जिनलाइज ग्रुप विषय रे जे केमिति राजा राम मोहन राय ही प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन ओके वेस्टर्न एजुकेशन काहे ना थ्रू एजुकेशन वी कैन चेंज आवर स्टेटस जेमिति आउ गोटे आमे डिस्कशन करथिले जेंडर जेंडर आल्सो ए वीकर सेक्शन so it is possible only through education girls educations so जेहेतु गर्ल्स मान को एते तांको फ्रीडम नथिला एजुकेशन पाई तो सेति पाई स्टेटस ता बहुत लो थी so how the status of women is increased how there is empowerment women empowerment started in Indian society it is because of education so education is very important so through education so there is improvement in the status of Dalits okay तो सेति में आमे जे देखिबा आउरी गोटे अलगा पार्ट होची कोन ना हाउ टू चेंज द स्टेटस ऑफ दलित ना इट इज थ्रू कन्वर्शन जेमिति आमे डिस्कशन करथले यस्टरडे महार मूवमेंट स्टार्टेड बाय बी आर अम्बेडकर so this movement means what na conversion if you want to change your status it's better to change your religion so religion change कर देले कोन ना because जदि आमे टिके डिस्कशन करिबा emergence of Buddhism Jainism in India it is why it is because of the dominance of Hindu religion or Hindu culture because Hindu religion Hindu culture is very orthodox very rigid okay so for that reason there are some restrictions okay मुझे एमती कहले religion caste संगरे attach अछि okay so जेहेतु Indian culture is a Hindu dominated culture it is a caste based society तो सेठी रिलीजन बहुत मेजर रोल प्ले करे तो सेठी पई कहला ना फॉर दिस रीजन दैट पीपल कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स इफ यू कंपेयर टू हिंदुइज्म और बुद्धिज्म so the principle of Buddhism is very simple okay not very rigid there is no practices rituals आम जो पूजा पद्धति को जो पाठ को very simple in Buddhism so Buddhism रे एमती किछि rigidity नहीं है and this religion is based on very simple okay so it's believe on karma it's believe on 8 path आम जति कहि परिबा तो तापरे it's based on 8 path what to do what not to do okay and one important thing is non-violence is the important concept in this concept in this Buddhism but सेति पई कोन हला ना this for solution of this exploitation ए जो दलित exploitation होता तार solution रे गोटे थिला कोन ना it is better to change the religion okay so that they will escape from this exploitation तो सेटा हितला सेति पई मूवमेंट हितला सेटा हितला तापर हम डिस्कशन करथले सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ऊपर ओके तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कोन ना हमें जो हमर जो राइट्स अछि व्हाट वी हैव आवर राइट्स सेटा को हमें मागिबा दरकार नै ओके तो सेटा न मागी कि हमें केमिति रेस्पेक्ट को मेंटेन करी रखियो पड़िबा इन द सोसाइटी तो सोसाइटी इज फॉर एवरीबॉडी not for a particular group or a particular class or particular a caste so society is for everyone तो समस्त पे society but because of this exploitations हम कौन दरकार now we have our own rights so सेट में self respect movement started by Rana Day तो ये सब movement हेतला for the protection of Dalit so this movement started by the people but there are other provisions hame discussion karithile jemiti governmental provisions like scheduled tribes so there are many provisions are there to protect or for the welfare of the Dalits okay sera hame discussion karithile then finally hame discuss kale gender upar the stratification re gender bi gote part the gender mo already jo mane those who are the new learners तो समझ जानते हो व्हाट इज जेंडर जेंडर मीन्स व्हाट ना सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस तो जोठी देखियो स्ट्राटिफिकेशन अछि बा स्ट्राटा अछि इनइक्वालिटी अछि सेठी डिफरेंसेस अछि बा इनइक्वालिटी अछि तो जेंडर डिफरेंसेस कोन बा जेंडर इनइक्वालिटी कोन ना इनइक्वालिटी
or differences among the gender. So this is known as socio-cultural differences. So that is known as gender. So marginalized group रे जो स्टेट डिस्कशन करथिले बा जो आज जो हमर सेशन अछि तादरे भी समिति तो marginalized group means रे जेंडर कोन पे आसला मो बारंबार स्टडी क्लास रे भी कहथिली इट इज फर्स्ट होची डेमोग्राफी पॉपुलेशन को नेकी फर्स्ट so on the basis of population on the basis of number so they come under this marginalized group so number play an important role ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି what is the difference between caste and dominant caste so caste is by birth but dominant caste is by achievement we occupy a status in dominant caste by achievement by the first thing is what the numerical strength जो कहथिले तो सेटा तापर अदर फीचर्स मु अगेन एंड अगेन रिपीट करिबिन तम बुझे हेतिबो सब तो सेटा तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज इंपोर्टेंट आमे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहउचे बा वीकर सेक्शन कहउचे तादर सबुठी इंपोर्टेंट होची कोन ना नंबर तो आमे जदि देखिबा शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब्स हो बा जेंडर हो ओमे तो एमाने को पॉपुलेशन बहुत कम ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମକୁ ୱିକର ସେକ୍ସନ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ରଖୁଛୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଓକେ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଦେ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ marginalized groups so we discuss about gender differences तो gender difference ର main problem ଆମେ discussion କରିଥିଲେ ହଉଛି patriarchy male dominated society so then we discuss about the solutions okay the solutions रे भी also same thing we discuss about two things one is individual for example जो movement started ହେଇଥିଲା ସବୁ started by the women's liberal feminism social radical feminism and other is by the initiative of government for example reservations हो बा ଯେତିକି facilities हो welfare facility तो सेटा हो तो lastly ଆମେ discussion करथिले children also come under the marginalized group so children's come under the marginalized group it is not because of the number both girls and boys it is come under the marginalized group because of their vulnerability means infant mortality rate is high because of malnutrition or other causes of safety so these are come under the marginalized groups so we discuss about marginalized group who are come under the marginalized group then what are the problems of marginalized group then what are the solutions or remedial measures of marginalized group so today we'll start with another concept जेमिति हमें caste system in India study करथिले okay मु जेमिति कहिथिले stratification is universal so stratification exists in everywhere stratification सबुआडे present अछि but in different form रे तो हमें particularly जेहेतु social stratification study करछे हमें जदि specifically देखिबा ताले Indian society stratification केमिति start हितला तो इंडियन सोसाइटी रे मेन तो स्ट्रैटिफिकेशन होची कास्ट सिस्टम जोटा हमें देखि तो ता संगे हमें डिस्कशन आउ गोटे करिवा दैट इज क्लास सो अनदर टर्म क्लास इज यूनिवर्सल ओके वी फाउंड क्लास सिस्टम एवरीवेयर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें सब जगह क्लास सिस्टम पाइबा बट कास्ट पर्टिकुलरली इंडिया तो जेमिति कास्ट इज वेरी इंपोर्टेंट इन इंडिया सेमिति क्लास आल्सो ए वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट इन सोशियोलॉजी इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इन सोसाइटी तो आम जो डिस्कशन कर सोसाइटी जे वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप तो सोशल रिलेशनशिप विथ नॉट ओनली विथ फैमिली बट विथ ऑल सोसाइटी तो सोसाइटी भी जेहेतु स्ट्रैटिफाइड है क्लास सिस्टम अच्छी तो से व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ क्लास सिस्टम इन इंडिया ओके तो आज आम क्लास सिस्टम रे हमें डिस्कशन करिबा व्हाट इज क्लास देन टाइप्स ऑफ क्लासेस in India particularly specifically in India remember types of classes and what is the importance of classes in India the first time jodi dekhiba jemiti mu कहतले caste is ascribed and class is achieved okay तो हम गोटे क्लास अचीव करूचे सोसाइटी रे जदि हम सिंपल देखियो जेंति कास्ट सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो क्लास सिस्टम सेमिति कोन ना क्लास सिस्टम जदि हम देखियो इन जनरल हम जे देखिबा three types what is rich class higher class middle class and lower class तो एटा को हम सिंपल तो डे टू डे लाइफ रे हम ये टर्म्स यूज करछे क्लास जे क्लास
ओके फॉर एग्जांपल आम ट्रैवल क्लास कि आम के बिजनेस क्लास इकोनॉमिक क्लास ओके तो वी आर कंफ्यूज्ड मुझे जेहेतु कही सोशियोलॉजी गोटे हूँ कनसेप्चुअल सब्जेक्ट ओके आमको कनसेप्ट क्लियर होगा पड़ेगा तो आम वी आर कंफ्यूज आम कंफ्यूज क्लास को लेकिन व्हाट इज क्लास ओके तो आम फॉर एग्जांपल आम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखा से देखा फॉर एग्जांपल क्लास जदि आम सोसाइटी देखा से देखुचे क्लास ओके सो एवरी स्पीयर आम टर्म्स यूज करचे क्लास बट क्लास मीन्स व्हाट ना क्लास मीन्स a group of people those who are similar background ताको हमें क्लास कहूचे ओके इट्स मे बी सोशल इट मे बी पॉलिटिकल इट्स मे बी इकोनॉमिक इट्स मे बी एजुकेशनल ओके तो ताको हमें क्लास कहूचे जो गोटे सिमिलर बैकग्राउंड रो फॉर एग्जांपल आम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखा आम कहचे फॉर एग्जांपल 10th क्लास 12th क्लास हमें कहीं कहूचे ना इट इज बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी गोटे ग्रुप सिमिलर जे हम जब इकोनॉमिक क्लास कथा कहबो जेमती रिच मिडिल पुअर तो आम ताको क्लास कहीं कहूचे ना इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी बिकॉज सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड सिमिलर फॉर एग्जांपल रिच क्लास दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से माने को सेम स्टेटस सेम पोजीशन सेम प्रेस्टीज सोसाइटी अछि आम जो मिडिल क्लास कहूचे इट इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी ओनली इट इज बेस्ड ऑन आवर वेल्थ जेमती स्ट्रैटिफिकेशन रो तीनटा पार्ट पावर प्रेस्टीज और स्टेटस अछि सेमिति तो ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और इकोनॉमी आम से स्टेटस टा पाउचे सिमिलर हम जदि लोअर क्लास देखिबा सेम थिंग इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ सिमिलरली आम जदि पावर कथा देखिबा तो पावर रे भी सेमिति अछंती क्लास इलाइट्स ओके पावर इलाइट्स governing elites and non-governing elites. So they also belongs to different class. So class caste परिके class भी सेमिति गोटे important concept in sociology. तो class रा simple terms रे definition होची a class is a group of people. Okay. तो मु group तो already आप कहिछ already learners मानू को जे group माने होची ना a collection of individuals those who have frequent interactions. तांका भीतर frequent interaction थिबो ताको हम group कहूचे. तो से क्लास होची इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दोज हु हैव सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो पॉलिटिकल हो सोशल बैकग्राउंड ताको हमें क्लास कहूचे तो आमर मेन टॉपिक होची क्लास इन इंडिया तो क्लास तो हमें जानि देले व्हाट इज क्लास तो हमें आज डिस्कशन करबा क्लास इन इंडिया रे दैट क्लासेस इन अर्बन एरियाज क्लासेस इन रूरल एरियाज मु जेमिति कहली टाइपोलॉजी ऑफ क्लासेस और क्लास केते प्रकार रो तो सेमिति तो आम जदि पर्टिकुलरली इंडिया रे देखिबा ताले रूरल क्लासेस अछि अर्बन क्लासेस अछि तापरे आउरी जदि आम ताको टाइपोलॉजी करबा इंडस्ट्रियलाइजेशन रे बा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे केमति क्लासेस अछि एग्रेरियन सोसाइटी रे केमति क्लासेस अछि डिफरेंट क्लासेस अछि तापरे आम डिस्कशन करबा मिडिल क्लासेस आम जो सोसाइटी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी रो जो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कशन करूतिले त आमे सब देखुतिले दीटा क्लासेस अछि so there is two classes and there is conflict between two classes but a middle class timers केमि कला जदि आमे इंडियन सोसाइटी देखिए मेजॉरिटी पीपल आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास पीपल बेस क्लास ता केमि एमर्ज कला सेटा आमे डिस्कशन करबा एंड फाइनली I'm already class I'm already discussing class struggle so again also we will revise that topic okay I'm out here I'm discussing kariba class struggle upare so we'll start with class in India okay so India re to caste thila but class kemiti emerge kala so this class emerged from Britishers previous class रे मु कहितली so India is a caste ridden society but because of westernization because of the influence of Britishers their policy so new classes emerge in India मु जेमिति कहितली इंडियन सोसाइटी गोटे होची एग्रीकल्चरल सोसाइटी तेबे हमें डायरेक्टली टॉपिक के आसीबो जे मु कहली जे जो क्लास एग्रेरियन क्लासेस आ होची इंडस्ट्रियल क्लासेस तो एटी क्लास केमिति एमर्ज कला the class emerged kala it is because of the impact of Britishers
because of the impact of westernization. ସେଇଠୁ ହିଁ classes ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ class emerge କେମିତି କଲା ନା it is because of our agricultural system। ତ ମୁଁ already previous class ରେ discussion କରିଥିଲି ଯେ agrarian class structure। ତ agrarian class structure ମାନେ କଣ? Agrarian class structure, remember। So agriculture ରେ କେମିତି different classes ଅଛି। This is not based on the caste। Caste ରେ is stratification ଟା ହେଇନି। This is based on the class or because of the wealth। ଯେମିତି କହିଥିଲି agrarian social structure ଗୋଟେ agricultural class ର ଆମେ ଯଦି agriculture society କଥା ଦେଖିବା rural କଥା ଦେଖିବା ତ ସେଇଟା କେମିତି divide ହେଇଛି। ଆମେ ତ caste system discussion କରିଛେ ଯେ caste system it is based on ascribed, it is based on the occupation। so occupation ଅନୁସାରେ different caste divide ହେଇଛି। but agrarian class structure ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ତା ମାନେ କଣ ନା ଏଇ class ଟା it is based on the status, economic status of the people। So with the impact of westernization, with the impact of Britishers, ये जो stratification टा है ना, आमे जदि simple रे देखिबा class आगु just दीटा थिला। गोटे आमे कहबा rich class और poor class। जदि आमे typical Indian society कथा देखिबा, traditional rural society कथा देखिबा, तो two classes थिला, rich class और poor class। So rich class who are belongs to rich class and those who are the landlords, zamindars, rich people, those who have property, so they belongs to the rich class। who are the poor class and those who are the farmers, laborers, so they belongs to the lower class। so in this way Indian society divided into only two classes। so there is no middle class। middle class concept India रे नथिला। आमे जेतु स्टडी डिस्कशन करछे क्लास इन इंडिया, तो मिडिल क्लास concept इंडिया रे नथिला। तो एटा स्टार्ट केमिति होला ना, इट स्टार्ट विथ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। केमिति ना व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स माने जब इंडिया को आसिले, सो बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, तांकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थिला, फर्स्ट दे केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पे आसिले। सो सेटा एते इम्पैक्ट पके नथिला। बट व्हेन दे रूल इंडिया, जब इंडिया को से माने शासन कले, तो सेतले कोन ना सेतले एटा डायरेक्टली अफेक्ट कला हम इकोनॉमी ऊपर। ओके, so economy is the backbone of Indian society, rural society थिला, तो सेठी अफेक्ट कला। तो सेतले मो इयरलियर क्लासेस रे भी कहितली विथ ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हैला। ओके, रिवोल्यूशन हैला, तो सेठी कोन हैला डायरेक्टली अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ इंडियन सोसाइटी। आम एग्रीकल्चर हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, बा आर्टिसंस माने अलगा जति सब लाइवलीहुड ऑप्शंस अछि। ओके, means non-agricultural occupations, maybe पोटर हो, blacksmith हो, जदि आमे कहि परिबा कुंभार हो बा लुहा काम जे करथुबो बा पोटर जे माटी हांडी काम करथु। तो in this way different occupations are there। so because of this industrialization is directly affect our economy। okay, both agricultural and non-agricultural। तो এটা directly affect कला हम agriculture को। तो जो डायरेक्टली अफेक्ट कला, तो सेठू ही डिफरेंट क्लासेस स्टार्ट हैला इन इंडिया। सो देयर इज डिफरेंट क्लासेस एमर्ज इन इंडिया, पर्टिकुलरली आमे जो कहचे मिडिल क्लासेस। सो व्हाई वी कॉल दिस मिडिल क्लास एंड व्हाई दिस टर्म इज इन वी यूज इन स्ट्रैटिफिकेशन। सो हमें स्ट्रैटिफिकेशन ने एक टर्म्स यूज एथि पे करू जेतु बारंबार कहती स्ट्रैटिफिकेशन मींस स्ट्रैटा, हायर हो, मिडिल हो, लोअर हो। तो सिमिलरली क्लास सिस्टम रे जो हायरार्की थिला, टॉप और बॉटम, हायर क्लास और लोअर क्लास, तो सेठी एमर्ज कला सब मिडिल क्लासेस। सो विथ ब्रिटिश इंपैक्ट, ब्रिटिश को सहित एक क्लास सिस्टम केमिति स्टार्ट हला इंडिया रे। मु यस्टरडे क्लास रे जस्ट के कहितली जेमिति देयर इज रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, देयर इज रिफॉर्म in taxation। so for that reason there is changes in our social structure or stratification। so जेमिति कहितली आगुरु इंडियन एग्रीकल्चर, हमें क्लास जदि टर्म्स टा यूज करिया माने ता संगे इकोनॉमी मस्ट आसीबो। तो एग्रीकल्चर
तो आगुरी एग्रीकल्चर था सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस मीन्स व्हाट ना ओनली प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. जेतिकी प्रोडक्शन करबा ओनली फॉर द कंजप्शन, फॉर द फैमिली ओनली, नॉट फॉर प्रॉफिट. बट आउट एग्रीकल्चर कौन ना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द प्रॉफिट मोटिव. तो सेइथि कौन ना जो ब्रिटिशर्स आसिले when Europeans came to India, okay, so they impose high taxes. Okay, first तो ସେମାନେ ଅଧିକ टैक्स impose कले एग्रीकल्चर रे instead of sharecropping, माने instead of फूड क्रॉप शेयर न करिकी काइंड रे न करिकी आगुरी जेंति बाटर सिस्टम थिला, बाटर सिस्टम रे हमें एक्सचेंज करूथलु फूड बा हो जा भी सर्विसेज हो, सेटा न करिकी दे impose money tax. The money से मैंने impose कर ले. They collected tax not through cash crops but through the money. Okay. तो ସେଇଠି money concept ଆସିଗଲା. तो जब money concept ଆସିଗला, we know that Indian agriculture is a subsistence agriculture. Okay. तो self independent agriculture. तो ସେଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆସିଲେ they impose high taxes on the farmers. ତ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଯୋଉ ଖଜଣା କହୁଛେ ସେଟା ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କଲେ ସେମାନେ. ଆଉ ଇମ୍ପୋଜ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ through money. And another problem is what how this class emerge in India na ସେତେବେଳେ they give power to the zamindars. Okay, so they give power to the zamindars. सो ये जमींदार सिस्टम जितला आसिला, जमींदारी आगुरु थिला बट जमींदार सिस्टम जितला आसिला थ्रू ब्रिटिशर्स आउरी सारा कांसेप्ट है जमींदारी, रयतवारी, महालवारी. ओके, तो यही सब सिस्टम सब आसी गला. ओके, सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन. जस्ट टिके तम इंफॉर्मेशन पाई म कहि दोछि. जमींदारी सिस्टम माने को ना द जमींदार्स दे विल कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स. जमींदार माने डायरेक्ट फार्मर्स कोठू बा कृषक कोठू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करिवे. देन रॉयतमारी मीन्स व्हाट ना गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे विल डायरेक्टली कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स. ओके, तो सेट इंटरमीडिएट इन महालवारी सिस्टम मीन्स व्हाट ना महालवारी मीन्स व्हाट ना द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द होल विलेज. तो ए मीन सब टैक्स कलेक्शन रा सिस्टम सब ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट कर. तो ये जो सिस्टम सहित क्लास रा कौन रिलेशन अछि, स्ट्रैटिफिकेशन रा कौन रिलेशन अछि, इंडियन सोसाइटी रे केमिति क्लास सब एमर्ज कला. तो जेतले डिफरेंट पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड कले, जेतले इंपोज कले, दे फोर्स द फार्मर्स टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स. मु एलियर क्लासेस रे भी कहि छी क्रॉप्स दी टाइप रा बा जो खाद्य शस्य हम कहू गोटे हूँ फूड क्रॉप्स आउट हूँ कैश क्रॉप्स. सो फूड क्रॉप्स ए फार्मर गोटे कृषक फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन करुच्ची कौन पे ना फॉर कंजप्शन पे. बट कैश क्रॉप्स वी प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स फॉर प्रॉफिट. तो मुझे मु कहि बारंबार हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी टॉपिक थिला कैपिटलिज्म. सो कैपिटलिज्म रो मेन मोटो बा मेन उद्देश्य कौन ना प्रॉफिट मेकिंग. सिमिलरली ब्रिटिशर्स आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग, profit making. So तांकर main intention is not development or welfare. Their main motive is what ना profit making. तो सेहिति पई तो फर्स्ट तो मु कहितली जे at least how they drain our wealth, जो कहितली drain of wealth ए concept develop by दादा भाई नारोजे. तो सी केमिति हम wealth को केमिति drain करथले माने ट्रांसपोर्ट करथले आम कंट्री रु नै कि इंग्लैंड रे नै कि सेठी मैन्युफैक्चर करी कि पुणी एठी सेल करथले in a high rate. तो आदरे कौन होला ना first our agriculture is affected, our cottage industries. So cottage industries माने कौन ना जो हमें कहि परबा क्षुद्र शिल्प. ओके, small scale industries. तो cottage industries destroyed. non agricultural sector artisans से मानकर अफेक्ट होला. तो आदरे कौन होला ना कौन ना जे तुम कहली जे हम इकोनॉमी रे चेंजेस आसिला. कार्ल मार्क्स जेमिति कहिसेंती बारंबार the society will change when there is change in economy.
So economy रे जितना change आसियो society जितना change आसियो. The same thing happen in India. So India रे भी सेमिति जितना economy रे changes आसिला सेतले आम social structure बा जो आम class structure रे भी changes आसिला. केमती ना मुझे जेमिति कहली आगु तो rich class थिला poor class थिला जमींदार और farmers थिले. But जितना ब्रिटिशर्स आसिले तांको impact रे कौन है ना middle classes new classes emerge कला. Middle classes कौन आम जदि economic point of view देखिबा. For example मुझे जेमिति कहली जे commercialization of agriculture. So commercialization of agriculture माने कौन simple terms आम जदि कहबा business or for profit. तो cash crops. So cash crops कौन ना cash crops जेमिति आमे कहबा cotton, jute, indigo, sugar cane. Okay. आमे जदि कहबा ओडिया रे कहबा बोले कपा हो बा आखु एडा सब होची cash crops. So in that time, in British time, so the Britishers and the Europeans they forced the farmers to cultivate indigo. Okay. तो इंडिगो कल्टिवेट करियाको तांको कुआगला बा जति कैश क्रॉप्स कल्टिवेट करिया कुआगला. तो जेहेतु इंडियन फार्मर्स आर वेरी पुअर, so it is not possible to produce indigo or cash crops. तो सेमाने कौन करिवे फर्स्ट तो दे आर लेंडिंग मनी फ्रॉम द जमींदार को सेमाने धान नियंती and they are very exploitative. जमींदारी सिस्टम इज a very exploitative system. Okay, it is a intermediary system हम जदि कहि परिबा. Intermediary काहे कहउचे ना it is mediator हम जेमिति कहउचे. So they are intermediary between the people or the farmers and the British government. So they known as the intermediaries. Okay. So but they occupy the higher status in the rural society. Zamindars because of their wealth or because of their power. तो आउ गोटे कौन ना जेहेतु कहल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आ कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर पई कैपिटल दरकार बा मनी दरकार फॉर प्रोडक्शन. सो फार्मर्स दोज हु हैव फ्यू लैंड्स जार कम लैंड्स अछि आइदर से माने सेल करी की दोज हु आर एग्रीकल्चरल फार्मर्स थिले बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दे कम टू द लेबर क्लास लेबरर हे गले. और जहाँ पाखे वेल्थ बा कैपिटल नथिला तो सेमाने कौन ना सेमाने दे लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो और प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स जेहेतु टैक्स कंपलसरी टैक्स तो देवाक पड़िबो तो सेहिति पय सेमाने कौन ना दे वांट मनी. तो मनी काठू आनिबे ना सेठी आउट क्लास एमर्ज कला मनी लेंडर मिडिल क्लास दोज हु प्रोवाइड लोन्स. हम जेमते लोन आनुचे सेमिति लोन प्रोवाइड करिया पे गोटे क्लासेस आसी गला मनी लेंडर्स सेमिति ट्रेडर्स. ओके. सो इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस क्लासेस आर इमर्ज इन इंडिया. तो जदि हमें एग्रेरियन क्लास देखिबा बा जो गोटे कृषि भित्तिक इंडियन सोसाइटी देखिबा सो कृषि भित्तिक सोसाइटी रे हमें देखिबा कोन ना खाली जमींदारी अछंती आ कृषक अछंती जमींदार्स एंड फार्मर्स आर देयर. But because of this impact of Britishers, so different new classes emerged. Okay. So classes emerged on the basis of economy. एटा मन रखिथिबो जेतु stratification द गोटे important concept होची power, prestige and wealth. So wealth is a criteria for the status in society. So on the basis of wealth, Indian society stratified on different classes. For example, जेमिति मु कहितली प्रीवियस क्लास रे भी डिस्कशन करिछि जे फर्स्ट होछि जमींदार सिस्टम. आमे जदि सिंपल रूरल सोसाइटी गोटे आमे जदि इफ यू इमेजिन ए रूरल सोसाइटी सो सिंपली हमको देखा जिवो रिच क्लासेस लाइक जमींदार्स दोज हु हैव मोर लैंड्स जार बहुत लैंड्स थिबो सेमिति इमेजिन करबा नहले आमे इमेजिन करबा पुअर फार्मर्स. बट इन सोशियोलॉजी इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन so there are different classes are there. तो क्लासेस केमिति एग्रीकल्चर रे अछि जेमिति कहले कि लैंडलॉर्ड्स बा जमींदार्स दोज हु ऑक्युपाई द हाईएस्ट स्टेटस and economy they occupy the highest status. Okay. Second thing what second class is what the second is what
na big farmers, peasants, tenants, and labor. So you see how our rural societies is classified on different classes. तो आमे simple दीटा जानते हैं जमींदार और farmers, पर ता भीतरे भी एमिक सब classification ଅଛି. तो ये classification कौन पे ना ये classification होती है on the basis of wealth or the holding of land. Holding of land means जार जितनी की जमीन थी बस बस जितनी की property थी बस ये अनुसार समाने सही class occupy करोगे. तो जेहेतु landlords आमे कहूँ landlords कौन पे कहूँ ना because they occupy more lands. जमींदार से हमें कौन कहते सेम थिंग जमी मीन्स व्हाट यदि हम ओडिया रे जमी मीन्स लैंड सो दो यू होल्डिंग लैंड्स मोर लैंड्स दे नोन आर लैंडलॉर्ड्स और जमींदार्स बट दे आर नॉट द real producer but they are rich they occupy the highest status in the society because of their socio-economic or political power then big farmers गोटे डिफरेंस ये जो क्लास सिस्टम हम डिस्कशन करूचे एग्रेरियन बा रूरल सोसाइटी रो क्लासिफिकेशन ऊपर तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जमींदार एंड ए बिग फार्मर और अदर फार्मर्स नाउ वन थिंग इज दैट द जमींदार्स आर नॉट द रियल कल्टिवेटर से माने प्रकृत चासी न से माने चाष करंदे दे आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दे आर द ओनर ऑफ द लैंड बट हु विल कल्टिवेट ना द फार्मर्स सिमिलरली जेम जमींदार कहले बिग फार्मर्स भी सेमती बिग फार्मर्स दे होल्डिंग मोर लैंड्स तांगर बहुत लैंड था ओके सो सम आर दे आर सेम थिंग दे आर आल्सो नॉट द कल्टिवेटर्स सो लेबरर्स और अदर क्लासेस आर वर्किंग फॉर देम तो अलग जितनी की चासी अछंती सेमान तांको पई काम करंती मिडिल फार्मर देन स्मॉल फार्मर तो एटा जो फार्मर हमें कहूचे मिडिल स्मॉल एटा सब ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग ऑफ लैंड एंड होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इकोनॉमी अनुसार तो मुझे एमिति क्लास रो क्राइटेरिया कोइ थी सो क्लास गोटे कैटेगरी जार इकोनॉमिक सिमिलर बैकग्राउंड थी तो सिमिलरली तो एट भी सेमिति बिग फार्मर्स मिडिल फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स देन peasants and tenants तो एटी गोटे टर्म्स कंफ्यूज होतुए क्लास स्ट्रक्चर जो एग्रीरियन क्लास स्ट्रक्चर हमें डिस्कशन करले तो तादर कंफ्यूजन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फार्मर एंड ए टेनेंट सो डिफरेंस इज दैट ना फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फील्ड माने गोटे फार्मर निजर जमी थिबो सेठी से निजे चाष करी निजे प्रोडक्शन करे बट गोटे टेनेंट जो हमें कहूचे टेनेंट्स तो से माने कौन दे आर द शेयर क्रॉपर्स दे हैव नो लैंड ओके सो दे आर बिलोंग्स टू द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल ओके तो से माने भाग चासी हमें जब कहूचे शेयर क्रॉपर्स तो सेटा से माने करन and last one is laborers so laborers are working for all classes आमी जेमदे कास्ट सिस्टम देखिले कास्ट सिस्टम रे हमें देखिले जेमदी सर्विस क्लास आमी जो कहूते caste system brahmin kshetra vaishya shudra so shudra are the service caste so they provide service to the all caste okay so similarly in class structure in india re the laborer class they provide service to the other castes so ei jo system started kon pe hela it is because of the policies of the british government because of the ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे एक क्लास स्ट्रक्चर आसी तो सेइटु ही एमर्ज कला मिडिल क्लास ओके मिडिल क्लास कांसेप्ट सेम किछ नथिला रिच थिला और पुअर थिला तो सेइथि पे हमर जो रूरल सोसाइटी देखले मिल सब एग्रीरियन क्लासेस आसी सो दिस इज अबाउट द रूरल सोसाइटी और एग्रीरियन सोसाइटी दैट हाउ देयर इज क्लास एमर्ज इन रूरल सोसाइटी और एग्रीरियन सोसाइटी सो इंडिया में भी ए रूरल सोसाइटी maybe a huge number of people rural people belong karanti okay more than 70% of population belong to rural area but still india with westernization with industrialization slowly it's urbanized okay urbanization so urbanization भी growth करथिला in that period तो हमें both हमें कहना जितला society sociology discussion करिबा so in sociology there are many branches are there rural sociology urban sociology so we have to study both the things
both rural sociology and urban sociology. So rural sociology is what? Now rural sociology is about study about the rural society or agrarian society. So ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ class structure discussion କଲେ, the first we start with the rural society because India is a rural society. Okay. ଯେମିତି India is a caste based society, ସେମିତି ଗୋଟେ rural society. So similarly, so India not only a rural society but also urbanized society because of westernization, because of modernization हो तो धीरे धीरे कौन ना रूरल सोसाइटी रो अर्बनाइज्ड है तो हमें प्रीवियसली भी डिस्कशन करथिले कैपिटलिज्म रे केमिति कैपिटलिज्म सडनली ग्रो कर नथिले तो कैपिटलिज्म ग्रो करिया पे टाइम लागितला गोटे सोसाइटी गोटे ट्रांसफॉर्मेशन आस्तला that how people mobile or how people migrated. Okay, so rural society people migrated ki urban area को आसिले तो with industrialization urbanization started है तो ସେଇଥିପାଇଁ urban sociology as a important branch of sociology तो आमे जेमि देखिले क्लास सिस्टम स्टार्ट होला जेमि रूरल एरिया रे डिफरेंट क्लासेस एमर्ज कला मिडिल क्लासेस एमर्ज कला ओके ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ तो जार जति की प्रॉपर्टी अछि बा जार जति की वेल्थ अछि सेही अनुसार क्लासेस एमर्ज कला रूरल सोसाइटी नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासेस इन अर्बन एरिया सो अर्बन एरिया रे क्लासेस केमिति एमर्ज कला आमे जदि सिंपली देखिबा जदि इफ यू डिस्कस अबाउट अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू क्लासेस आते हैं कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स ओके यदि हमें सिंपल कैपिटलिस्ट माने पूंजीपति और वर्कर्स माने जो माने श्रमिक तो हमें सिंपल क्लासेस बट हाउ अदर क्लासेस एमर्ज तो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन मैं ऑलरेडी कहि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट मैनुअल इट इज मशीनरी सिस्टम तो it's done by machines so for industries we need different kind of individuals different professional individuals तो आमे जेतले डिस्कशन करिथिले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल थ्योरी रे तो सेठी आमे डिस्कशन डेविस मुरेंगो थ्योरी जे केमिति वन पोजीशन इज एक्वायर्ड बाय द एलिजिबल पर्सन तो गोटे एलिजिबल पर्सन ही सेही स्टेटस ता पाइबा दरकार तो सिमिलरली आमे जदि इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखिबा और अर्बन सोसाइटी देखिबा सो वी नीड डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी आमे जे देखिबा जो क्लास स्ट्रक्चर अछि सेठी स्पेशलाइजेशन नै ऑल नो एवरीथिंग एवरीबॉडी नो हाउ टू कल्टिवेट समस्त जानि जंदे कृषि केमिति करा जाय सो दे नो बट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन अर्बन सोसाइटी स्पेशलाइजेशन दरकार ओके सो एठी मु आ गोटे थ्योरी जस्ट सहित लिंक करी सोशल थॉट रे तमे सेटा पढिबो समस्त लर्नर्स जे वन क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट इमाइल डर्कहेम ओके ही डिस्कस अबाउट सॉलिडारिटी ओके तो सॉलिडारिटी माने कोन ना बॉन्ड बा यूनिटी आमे जाउ कहि पारे वी फीलिंग कहि परिबा सो इज थ्योरी ऑफ सॉलिडारिटी तो ता देरे कोन अछि ना ता देरे से कहिसंती ना डिविजन ऑफ लेबर गोटे कांसेप्ट से कहिसंती डिविजन ऑफ लेबर मींस व्हाट ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी सो गोटे वर्क को केमिति हमें डिस्ट्रीब्यूट करियो यदि हमें रूरल सोसाइटी रो क्लास स्ट्रक्चर देखिबा तो रूरल सोसाइटी रे एनीबॉडी कैन कल्टिवेट समस्त जानते टेक्निक हाउ टू कल्टिवेट it's not a difficult method or difficult practice but in rural society compared to rural society in industrial society or urban society the division of labor is complex simple terms रे division of labor माने कोन ना गोटे काम को डिस्ट्रीब्यूट करी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रे हमें कोन सिंपल हमें गोटे क्रॉप्स प्रोडक्शन पे हमें वर्क करूचे बट हमें जदी इंडस्ट्रीज देखिबा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखिबा तो सेठी कोन ना सेठी हमको डिफरेंट स्पेशलाइज दरकार और इजी टर्म रे कहबी एटा सब हम क्लास सहित रिलेटेड सेट में एग्जांपल दे कहू टेक द एग्जांपल ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ ए कार ओके सो इंडस्ट्री हम जदी कहबा एनीथिंग व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज तो किछि भी जदी हम गोटे मैन्युफैक्चर ऑफ कार देखिबा तो गोटे कार मैन्युफैक्चर पे हमको डिफरेंट स्किल्ड पर्सन दरकार
इंजीनियर्स दरकार है ओके अलग टेक्नीशियन दरकार है तो समस्त आमको दरकार ता संगे वर्कर्स दरकार लेबरर्स दरकार तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्किल ओके एटा कहबार उद्देश्य मन रखु मुझे कही कास्ट सिस्टम हूँ आस्क्राइब और क्लास सिस्टम हूँ अचीवमेंट तो ये जो क्लास सिस्टम टा आसला क्लास इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट तो आम स्किल अनुसार आम टैलेंट अनुसार ही आम किसी अचीव कर तो मुझे इमाइल दुर्खेंग थ्योरी कहती डिविजन ऑफ लेबर तो सेमिति ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ही डिस्कस अबाउट टू थिंग्स सेटा सोशल थॉट रे तुम पढ़िबो इन दिस थियोरी ऑफ सॉलिडारिटी से कहते गोटे हूँ मेकानिकल सॉलिडारिटी आउ गोटे हूँ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी सो मेकानिकल सॉलिडारिटी इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सो मेकानिकल टर्म्स को नहीं कंफ्यूज हबनी तो मेकानिकल सॉलिडारिटी कहीं ना सीटी बहुत सिमिलरिटी होची जेमिति एग्रीकल्चर आमे कहू तो एग्रीकल्चर रे क्लास स्ट्रक्चर टा एते कॉम्प्लेक्स नु बहुत सिंपल बट आमे जदी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बा अर्बन सोसाइटी रो देखिबा क्लास स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स व्हाई ना इट इज बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर सो अर्बन सोसाइटी रे क्लासेस एमर्ज एथि पे गला ना बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ओके तो मुझे जमीती कहली गोटे मैन्युफैक्चर ऑफ कार सो गोटे कार पे हमको डिफरेंट टेक्नीशियन दरकार स्किल्ड पर्सन्स दरकार तो सही अनुसार ही क्लास स्टार्ट हो गला अर्बन इंडिया सो मुझे बारंबार कहूँ इंडियन सोसाइटी जे एग्रेरियन सोसाइटी और कृषि भित्तिक रूरल सोसाइटी बट स्लोली स्लोली डिफरेंट मिडिल क्लासेस एमर्ज व्हाई ना इट इज बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन so because of urbanization mu koichi how people migrating to urban areas tapre because of promotion of education ro development hela how education through education different skills persons emerge kale और से अनुसार classes divide हे तो सेमिति capitalist class आसी गला those who occupy the higher position in the our stratification तो कैपिटलिस्टिक माने कौन ना इकोनॉमिकली पॉलिटिकली तापर मिडिल क्लास रे कौन माने आसी गले अर्बन एरिया पर्टिकुलरली जेमिति कहले स्किल्ड पर्सन्स ओके स्किल्स मींस स्पेशलाइज्ड पर्सन्स एबे जदी हमें देखबा डिफरेंट ऑक्युपेशंस अछि डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो बाय एनीथिंग सो दे ऑक्युपाई अ पोजीशन देन अदर पर्सन्स फॉर एग्जांपल्स लाइक वर्कर्स तो सेमाने गोटे क्लास एमर्ज कला बिजनेस क्लास एमर्ज कला So in this way, both rural society and urban society is stratified. So it is stratified or divided in different classes on the basis of division of labor. तो हम labor अनुसार ही बा हम occupation अनुसार जेमिति caste system रे हम study करछे जे caste system is based on occupation. Similarly, class system also classified on the basis of occupation. So occupation अनुसार different क्लासेस आसीगला तो सेइथ में हमें जे देखिबा बहुत सारा क्लासेस आसला अर्बन एरिया रे जेमिति कमर्शियल इंडस्ट्रियल क्लासेस आसीगला कॉर्पोरेट क्लासेस आसीगला देन ट्रेडर्स शॉपकीपर्स तो एमित सब क्लासेस आसीगला हमें कास्ट सिस्टम रे स्टडी करथिले ऑक्युपेशन बेसिस रे जेमिति कास्ट सिस्टम हेची तो सेमिति क्लास सिस्टम भी सेमिति डिफरेंशिएट हे गला इन urban areas okay so in rural areas what are the class structure or what are the agrarian structure zamindars big farmers middle farmers lower farmers or small farmers then tenants and then the laborers a class jemiti hella on the basis of occupation similarly on the basis of occupation also urban societies re different classes start he gala jemiti professional classes हम कहि परिबा professional classes means professionals that may be technical हो बा teaching हो तो एटा से professional आसी गला तापर corporate sector आसी गला ओके तो corporate class कोटे रहला तापर आ गोटे हला trading class for example like shopkeepers जो माने suppose जो दुकान हमें कहूचे small shopkeepers हो बा trading हो सेमानकर गोटे class आसी गला
ଯେମିତି our past ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଥିଲା, ତ ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପର ସବୁ କ୍ଲାसेସ୍ ଆସିଗଲା। ଓକେ, ଟ୍ରେଡିଂ କ୍ଲାसेସ୍ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ଲେବର କ୍ଲାसेସ୍. So in this way the society is stratified or classified on the basis of economy or on the basis of occupation ରେ କଣ ହେଲା ନା society stratify ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କେମିତି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି, ବୋଥ ଇନ ରୁରାଲ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଫିଚର୍ସ। So what are the features of a class in India? ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି is both agricultural and industrial society. Society class feature कौन? Feature is very simple. Okay. So ଆମେ ଯଦି ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛେ society is a web of social relationship, ଗୋଟେ network, so relationship is must. So in rural society the relationships are very simple and cooperative. Yesterday class ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ caste system ପଢେଇଲା ସବୁ ଜଜମାନି system, ତ ଜଜମାନି system ରେ how there is a cooperation between two classes, ଦିଟା class ଭିତରେ କେମିତି, ଦିଟା caste ଭିତରେ କେମିତି cooperation ଅଛି, interaction ଅଛି. So simple society ର class very simple, the features. Okay, complexity ନାହିଁ, there is interrelationship, personal relationship, face to face relationship. So this is found in our rural society or in agricultural society. तो ଆମେ why we discuss relationship ना, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି society is a web of social relationship. Without relationship, without interaction, it is not possible to survive. तो ସେଇଥିପାଇଁ जो agrarian society ବା rural society ରେ जो class structure ଅଛି ସେଇଠି differentiation ଅଛି, but ସେଇଠି interaction ଅଛି, face to face interaction, cooperation ଅଛି. Okay, so ଯେମିତି କହିଲି different classifications କହିଲି, ତା ଦେହରେ interactions ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ inter relationship ଅଛି, but comparative to urban area, ଯଦି ଆମେ urban area ଦେଖିବା ବା industrial area, so relations are impersonal. Class structure the relations are impersonal, not face to face relations. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି division of labor, agriculture ରେ interpersonal relation ଏତେ ଅଧିକା ଥାଏ କାହିଁକି ନା, for example agriculture ଯଦି ଆମେ କହିବା, so agriculture all are working in the field. Okay, so they are frequently interact with each other, same type of work. ମୁଁ ଆଧରେ ଆଉ ଟିକେ ବି theory discussion କରିବି. Okay, don't be confused ଯେ I mean stratification ରେ ଏତେ theory କାଇଁ ପଢା ହଉଛି ନା, because ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ theory is very important. ତ ମାର୍କ୍ସ theory ମୁଁ ଯେମିତି discussion କରିଥିଲି starting ରୁ stratification ରେ, how society passes from one stage to another stage. Okay, the historical materialism କହିଥିଲି ଯେ how ଗୋଟେ society କେମିତି change ହଉଛି ଗୋଟେ society ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ society, it is because of class struggle and it is because of economy. ତ ସେମିତି ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ theory କହିଥିଲେ. Okay, ଏଇ ଯୋଉ theory ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ capitalism ହଉ, ତ ସେଇ theory ରେ ଏ ଯୋଉ historical materialism ହଉ, dialectical materialism, ତ ତା ଦେହରେ ସେ ଗୋଟେ terms ବି ବହୁତ ସାରା terms use କରିଥିଲେ, ଯେମିତି mode of relation, mode of production. ଏଇ ସବୁ terms ସେ यूज କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନ, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ? ତ ଆ ମାନେ ହଉଛି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିଲେସନ ମାନେ ଦିଟା କ୍ଲାସ ଭିତରେ ରିଲେସନ କେମିତିଆ, ଆଉ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ ହାଉ वी ପ୍ରଡ୍ୟୁସ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ। ତ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଉ ରିଲେସନ ଥ୍ରୁ ରେ ହିଁ କ୍ଲାसेସ୍ ଏମର୍ଜ କରୁଛି ସୋସାଇଟି। ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି, ଧର କ୍ୟାପିଟାଲିଜମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। So in industrial society there are two classes, okay, capitalist and workers. So what is the mode of production? The mode of production is what? The mode of production is machinization. Okay, machine through रे हमें production करूँ। Then what is the mode of relation? The relation कौन थिला? The relation is exploitative because the capitalists are exploit the workers. तो थियोरी एटा तमे डिटेल ले सोशियोलॉजिकल थॉट क्लासेस जतो स्टार्ट हबो तमे डिटेल ले पढिबो, मु जस्ट लिंक करी कहूची।
The mode of relation and mode of production also play an important role in the emergence of classes in India. तो आम रिलेशन अनुसार बा आम मोड ऑफ प्रोडक्शन अनुसार आम क्लासेस से कहली आ क्लासेस सोसाइटी रे इंडियन सोसाइटी डिफरेंट क्लासेस अच्छी तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन बा मोड ऑफ रिलेशन कौन ना जेमिति कहले दर कैपिटलिस्ट why they occupy the high status na it is because of wealth because of money power so money power pai they occupy the high status so they control everything they also control power also jodi ame in case of India dekhiba so in India is a democratic country political parties are there but in time of elections who are the lobbies who provide money to the political parties this corporate sector so they occupy both economic and political power so they influence economy and politics जदि किसी पॉलिसी हो बा किसी डिसीजन मेकिंग हो सो दिस बिजनेस क्लास बा जो हायर क्लासेस कैपिटलिस्ट में जा को सो दे इन्फ्लुएंस टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक अंबानी हो टाटा बिरला so all these peoples they both occupy higher class in the society because of their wealth and political power okay so next come to another class those who are the professional class in urban areas so professional class who now professional class those who are skilled or specialized persons specialized in their own field so they known as the professionals professional ame koi pariyo next come na traders okay so traders means business class simply तमे क्लास को भी कास्ट सहित कास्ट हमर जो अछि स्ट्रैटिफिकेशन जो कास्ट ता सहित भी लिंक करि परियो जेतु कास्ट भी सेमिति ऑक्युपेशन रे बेस्ड अछि क्लास भी सेमिति ऑक्युपेशन से बेस्ड अछि और सेही अनुसार ग्रेडेशन नहीं ओके बट वन थिंग इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास ना कास्ट सिस्टम रे मुझे इट इज ascribed so on the basis of knowledge they occupy the higher status but in urban areas a person occupy a higher status on the basis of class on the basis of achievement गोटे लोअर क्लास पीपल भी गोटे बिजनेसमैन हो परियो गोटे बिजनेसमैन भी गोटे कॉर्पोरेट हो परियो आ गोटे बिजनेस टाइकून हो परियो सो इट इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट तो क्लास सिस्टम टा अचीवमेंट ऊपर बेस तो आम अर्बन सोसाइटी जो क्लास स्ट्रक्चर आम डिस्कशन कले तो तादर आम एटा देखा जे गोटे क्लास ऑक्युपाई करछन ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट जेमिति कहले इंडस्ट्रियलिस्ट बिकॉज ऑफ वेल्थ आउट भी जिनस इंडस्ट्रियलिस्ट बा जो अच्छे बा क्लास भी सो क्लास रे भी सम एक्सटेंड टिके आस्क्राइब माने जन्मगत केमिति ना कास्ट रे हम जेम देखले जन्म रु ही हम गोटे स्टेटस पाउचे तो सिमिलरली क्लास रे भी सेमिति देखिबा not everyone they achieve a status on the base they are achieving because of ascriptions take the example of like big corporate sector jeti ke achi the suppose Ambani ho but Tata ho so they are not the creator of their own status so ascribed ame kain koche for example Dhirubhai Ambani father of Anil Ambani Mukesh Ambani so CSA empire start karthile से क्लास टा आनिथिले but later their ancestors or their children they occupy that status तो सम एक्सटेंट रे हमें आपको टिके ascribe भी कहि परियो तो सोसाइटी रे अर्बन सोसाइटी रे क्लास तो ascribe भी ही परिबो तो हमें देखिले फर्स्ट होची कैपिटलिस्टिक क्लास तापर प्रोफेशनल्स दोज हु आर स्पेशलाइज्ड ओके सो नेक्स्ट इज ट्रेडर्स आम जब कास्ट सिस्टम देखा आम वैसे कहीपर ट्रेडर्स बिजनेसमैन मीन्स दोज हु आर नॉट स्किल्ड बट देयर ऑक्युपेशन इज डिफरेंट देन पीटी लेबरर्स अनदर टर्म्स पीटी लेबरर्स मीन्स व्हाट कोन ना माने दे आर नॉट लेबरर्स आम पीटी ट्रेडर्स बा पीटी लेबरर्स टर्म्स जो यूज करछे ता माने होचे क्षुद्र बा स्मॉल तो से माने तादर इंक्लूड हेबे ओके और लास्ट क्लास होची दोज हु आर पुअर क्लास
सो यही परिके हमर इंडियन सोसाइटी रे बोथ इन रूरल सोसाइटी रे आउ अर्बन सोसाइटी रे क्लासेस एमर्ज करछि सो एटा फीचर्स थिला मु जेमि फीचर्स कहली फर्स्ट फीचर होची रूरल और अर्बन भितरे बा एग्रेरियन इंडस्ट्रियल भितरे फर्स्ट होची रिलेशनशिप so in rural society relations are personal face to face cooperative but indian society in urban areas features what are the features now impersonal relations not face to face so there is no we feeling interdependence another important thing is interdependence सेति पय कहले division of labor जो terms टा यूज करथिली so division of labor कोना interdependence काना गोटे लोक आउ गोटे लोक ऊपर डिपेंड करिया पड़ुछ गोटे फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिया पे हमको अलगा लोक ऊपर डिपेंड करिया पड़ुछ तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर तो सेइठु हमरा क्लासेस एमर्ज हैला ओके तो एबे तो आपण सब क्लियर हो जाइथिबे जे क्लास केमिति एमर्ज हैला ओके क्लास केमिति हाउ क्लासेस एमर्ज इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड and how after independence okay so during british period that is rural society agrarian society and after independence that is how classes emerge in urban areas okay urban or industrial areas so this is about that how there is a emergence of a new class in india तो इंडिया कास्ट सिस्टम थिला कास्ट स्टूडेंट थिला बट हाउ क्लासेस एमर्ज इन इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली मिडिल क्लासेस तो मु जेमिति कहली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मिडिल क्लासेस एमर्ज एथि पय कहले ना इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स ओके जेमिति ट्रेडिंग क्लास हो मनी लेंडिंग क्लास हो एमान सब एमर्ज कले अब इन अर्बन एरियाज व्हाई क्लास एमर्ज ना इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट okay because of the requirement mo already kahichi je agrarian society rural society is very simple okay but urban society is very complex society okay complexity is there so because of this complexity so requirement increase jehetu ame urban society dekhiba urban society re requirement bahut adhika demand adhika mu jemiti कहली गोटे society गोटे society रो गोटे society की change हला कोन पई ना it is because of the demands okay so demand पाही सप्लाई पे ही गोटे सोसाइटी चेंज हला तो सेत पे so in urban societies रे how this middle classes particularly terms middle class हम जो कहू हम जदी इंडियन सोसाइटी देखो मेजॉरिटी आर मिडिल बिलोंग्स टू मिडिल क्लास so हम जो मिडिल क्लास टा एमर्ज हला why that is middle class emerge because of our requirement of the society to fulfill the demand of society जेतो urban society complex society different requirement अछि तो से अनुसार for industry we need different personnel or different persons for other professions we need different persons or for service we need different persons so on the basis of occupation or on the basis of requirement classes emerge in india okay so एटा थिला emergence of class in india in rural india and in urban okay तो अलगा फीचर्स कोन जेमिति गोटे कथा कहले रिलेशनशिप रे सेमिति ऑक्युपेशनल डिफरेंसेस भी अछि okay so in rural areas occupation is very simple but in urban areas the occupations are different in rural areas the division of labor is very simple and in urban areas the division of labor is very complex okay so these are some of the features and another thing is that in rural areas the classes emerged the class emerged heji that because of agricultural system so it is organized sector unorganized sector but in urban areas or industrial areas it is organized so ame jodi dekhiba we found classes in urban areas so generally classes are very organized industry ho professional ho the organized sector ta काम कहू so these are the difference between these two classes rural or urban classes so now we'll back to again
आमे ऑलरेडी डिस्कशन करिचे जेहेतु आमे क्लास डिस्कशन करूचे तो क्लास संगे हमको अगेन टिके रिपीट करिया पड़िबो जो क्लास स्ट्रगल में डिस्कशन करथिली जो हम कैपिटलिज्म रे हमें ऑलरेडी प्रीवियस ब्लॉग्स रे हमें डिस्कशन करिचे जे हाउ कैपिटलिज्म स्टार्टेड हाउ क्लास स्ट्रगल स्टार्टेड तो अगेन हमें आउ टिके बैक करबा से स्ट्रगल को ओके कहना प्रतिटी कांसेप्ट रे हमको थ्योरी डिस्कशन करबा को पड़िबो तो जेहेतु कार्ल मार्क्स वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट एंड ही बहुत इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देइचंती क्लास ऊपर पर्टिकुलरली ओके नॉट इन कास्ट ओके स्ट्रैटिफिकेशन रे क्लास ऊपर बहुत देइचंती तो सेटा ऊपर हम टिके डिस्कशन करबा होप समस्ते मन रखिथियो मु जो क्लास स्ट्रगल कहितली हाउ देयर इज ए स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस ओके बहुत सारा कांसेप्ट भी मु कहितली क्लास इन स्ट्रगल क्लास फॉर स्ट्रगल तो आज आउ किछि नुवा जिंस मु आदरे ऐड करबी हैला कि तो तादरे कोन जो ये क्लास स्ट्रगल हेतिला तो फास्ट तो मु कहि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कर मेन मोटो कोन ना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मेन मोटो होची दे आर against everything okay so सेति पे दे आर कॉन्फ्लिक्ट व्यू तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बा कैपिटलिज्म रे एक क्लास सिस्टम केमति स्टार्ट हला आ क्लास स्ट्रगल केमति हला हम तो ऑलरेडी डिस्कशन करछे डिफरेंट सोसाइटी रे डिफरेंट क्लासेस एमर्ज करिछि ओके पर्टिकुलरली जेमति बाइपोलर कहबा टू क्लासेस ओनली मास्टर एंड स्लेव्स हो बा फ्यूडल लॉर्ड्स सर्व्स हो बा कैपिटलिस्ट हो एंड वर्कर्स हो ये दीटा क्लास ही हम स्टडी करथिले तो जेहेतु हम स्टडी करछे क्लास इन क्लास पार्ट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ना डीमेरिट्स कोन ओके हम तो डिस्कशन करले जे क्लास ऑक्युपेशन बेसिस रे हला हम रिक्वायरमेंट अनुसार हला हम डिमांड अनुसार डिफरेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम what is the problem behind this stratification or behind this class तो क्लास रो मेजर प्रॉब्लम थिला होची इनइक्वालिटी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस रे भी कहिछि जोठी इनइक्वालिटी अछि सेठी डिस्टर्बेंसेस अछि एंड स्ट्रगल अछि तो टुडे we'll discuss about this class struggle that how class struggle emerged in capitalism so I will not repeat all the things again I'll just add some new things to it that class struggle started because of class consciousness it terms मन रखते हो class consciousness बस solidarity मु जेमिति previously discussion कलास को इमाइल दुर्खेम को theory कहउथिली जे solidarity theory mechanical solidarity organic solidarity so mechanical solidarity मान कोन ना सिटी अधिका बॉन्ड अछि अधिका क्लोजनेस अछि वी फीलिंग अछि बट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कोन ना कम बॉन्ड अछि यदि हमें देखिबा सो नाउ डेज रिलेशंस आर बिकम वीक हमें समस्त पाखा पाखी अछि टेक द एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया सो एर्लियर जेहेतु पॉपुलेशन कम थिला सेठी क्लास कॉन्शियसनेस थिला ओके सो वी नो ईच अदर बट नाउ डेज यू सी वी आर टुगेदर हमें समस्त एकाठी अछि बट सिटी क्लास कॉन्शियसनेस नहीं जेमिति सिंपल एग्जांपल देबी टेक द एग्जांपल सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और एनीथिंग एल्स तो हमें समस्ते अच्छे माने समस्ते हमें कांटेक्ट रे अच्छे बट देयर इज नो solidarity no unity no emotions are there in this social media so same thing organic solidarity means same thing हमें समस्ते अच्छे फॉर एग्जांपल जो डिवीजन ऑफ लेबर कथा कहले ए जो क्लास अच्छी so we belongs to different classes but there is no solidarity so there is no unity so there is no interaction जेमदी division of labor कथा कहले गोटे इंडस्ट्री रे different classes अछंदी capitalistic classes अछंदी professional skill classes अछंदी worker classes अछंदी but there is no interaction so there is no interrelationship so this is the difference the class consciousness is very important in class तो सेहिति पई हम जो डिस्कशन करथिले कैपिटलिज्म रे क्लास स्ट्रगल तो क्लास स्ट्रगल तो हम बहुत सारा डिस्कशन करिचे तो क्लास स्ट्रगल
ଏଇଟା ଗୋଟେ important part କଣ ହଉଛି ନା class consciousness. So there is no interrelationship between different classes. So this class struggle started. ଆଉ ଥରେ repeat କରିଦେବି ସେଇ concept ଟା, class in itself ଆଉ class for itself. This जो class struggle start ହେଲା, so this class struggle started because of this consciousness. Consciousness means କଣ ନା we feeling, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ethnocentrism, in group out group. Okay, so ଏ groupism, ଏ ଯୋଉ group feeling, so ସେଇଟା କୁହାଯାଏ consciousness. ଯଦି ଆମେ simple ରେ କହିବା, ଆମେ sometimes use we belongs to middle class, ଆମେ middle class ଲୋକ, ଆମେ କାହିଁ କହୁଛେ ଆମେ middle class ଲୋକ, it means we have a we feeling, means we have a similar background, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ. Suppose rich class people, they ତାଙ୍କ attitude ହଉଛି we belongs to rich class, we should keep distance from the middle class people. ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ status ଯୋଉ କୁହନ୍ତି status କୁ maintain କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି. ଓକେ, ତ ସେଇଠି କଣ, ତ ସେଇଠି ଏଠି କ୍ଲାସ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଧର ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ, so their thought is different, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ର thought different, middle class ର ତାଙ୍କ thought different. So capitalistic class ର କଣ ନା their thought is what ନା profit, conspicuous consumptions, aristocratic life, ଏଟା ତାଙ୍କ thought. middle class କଣ ନା middle class ର ହଉଛି saving, ଏଇଟା ସେ କ୍ଲାସ ର ଫିଚର୍ସ. ଆଉ ପୁଅର କ୍ଲାସ ର କଣ ନା subsistence, just for survival. Okay, so their class belongs to only for survival. ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ conspicuous consumption class, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି stratification ରେ, so stratification ରେ ଯେମିତି upward mobility downward mobility ହୁଏ, ଆମର ତ mobility ଅଛି topic ରେ, ତ ଯୋଉ upward mobility ହୁଏ ଏଟା କଣ ପାଇଁ, ଏଟା mobility ହୁଏ on the basis of economy ରେ, class ରେ. For example ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି lower classes କେବେ ଚାହିଁବେନି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ low ରେ ରହିବାକୁ, they trying to raise their status. So lower status middle class को ଯିବେ, middle class rich class को ଯିବେ, rich class से ଚାହିଁବେ କେମିତି preserve କରିବେ, ଯେମିତି downward mobility ହବ ନାହିଁ. ତ how to preserve the status, how to preserve the class, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ rich class ବା aristocratic class, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ କେମିତି preserve କରିବେ? So ସେମାନଙ୍କର କଣ preserve, ଆମର sociology ର ଗୋଟେ terms ଅଛି conspicuous consumptions. Okay, these terms given by Veblen, okay, one sociologist. So Veblen এই କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା conspicuous consumption କଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ କ୍ଲାସ ର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସେତିକି ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟର୍ମସ୍ ଟା ସେ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ conspicuous consumption. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ରିଲେଟିଭ ଡେପ୍ରିଭେସନ ବା ପଭର୍ଟି ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପଭର୍ଟି ରେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ହଉଛି absolute poverty ଆଉ ଯେ relative poverty. Absolute poverty କଣ ନା when we are not able to fulfill our basic needs like food, clothing and shelter. ଆଉ relative poverty କଣ ନା we are not poor, we fulfill everything, but when we relate our status with other status or our class with other class, then we feel deprived. Okay, so everything is related to this relative. Okay, so we'll back to our concept, the class conspicuous consumptions. So to maintain a status quo of a class, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ର status maintain କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତା requirement fulfill କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି rich class ହଉ, aristocratic class ହଉ ବା capitalist class ହଉ, so how they will maintain the status in the society na it is through conspicuous consumption. So conspicuous consumption ର ମାନେ କଣ ନା we means unnecessarily we consume or unnecessarily we waste money. ତ ଗୋଟେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ବା ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନା ସେଭିଂ. ଓକେ, କମ ରୁ କମ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ. ବଟ୍ ରିଚ୍ କ୍ଲାସ ର ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ନା ଇଟ ଇଜ ଏବାଉଟ conspicuous consumption, or ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମସ୍ ରେ କହିବା showing off, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା conspicuous consumption. ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକା
एक्सपेंड करवा स्पेंड करवा मनी तो ସେଇଟା କୁହାଯାଏ conspicuous consumption ତ ଯେମିତି କହିଲି for the survival of life we need food clothing and shelter that is sufficient but ଆମେ ଯଦି rich class ବା upper class ଦେଖିବା ତ upper class କର that basic need is already fulfilled but they spend more money on unnecessary ଯେତିକି required maybe food ହଉ wastage of food ହଉ বা for example purchasing of luxurious car ho by purchasing of many flats ho okay so their life is luxurious আমি যেটা কোচে ক্লাস সে ক্লাস রে লার্নার্স ক্লিয়ার হউতিবো তো ক্লাসটা বেশি মানে মেজরিটি রে ক্লাসটা ইজ বিলংস টু ইকোনমি ওকে ওয়েল ଆମେ যে স্ট্রাটিফিকেশন রে স্টাডি କରୁଛେ ডিসকশন କରୁଛେ যে প্রেস্টিজ স্ট্যাটাস ওয়েলথ तो इकोनॉमी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल सो जदि वेल्थ थिबो बा मनी थिबो ताले आमे अलगा स्टेटस भी पाई जिवो फर्स्ट थिंग इज व्हाट मुझे जेमि कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कहली जे एटलीस्ट एक्सेस कंजप्शन करिबा एक्सेस अननेसेसरी स्पेंड करिबा तो आदर तो प्रथमे जाना पड़ जाउ जे इकोनॉमिक स्टेटस हाई अछि ओके इकोनॉमिक स्टेटस हाई अछि क्लास रो another thing is what now when economic status is high in the society obviously social status भी high होगा so जदि social status high अछि बा economic status high अछि तो political status भी high होगा तो सेहिति पे हम जब capitalistic society discussion करूथले capitalism रे तो capitalist are not the owner of the capitalism are not the owner of economy but also they are powerful ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଯାହା ପାଖରେ economy ଅଛି he can occupy anything else ଯାହା ପାଖରେ money power ଅଛି से पॉलिटिकल स्टेटस भी पाई परिबो सोशल स्टेटस भी पाई परिबो और क्लास को मेंटेन भी कर परिबो तो जो कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कथा कहली क्लास रे जो क्लास हायर क्लास कॉन्स्पिशियस ना कॉन्स्पिशियस कंजप्शन इज ओनली टू मेंटेन द स्टेटस मु जेमिति कहली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोबिलिटी तो जो तांको स्टेटस टाको क्लास को मेंटेन करिया पे तांको सेतिकी करिया पड़े तो ताकू कह जाए कॉन्स्पिशियस कंजप्शंस ओके तो एटा कोन होची ना क्लास कॉन्शियसनेस आमे जतरा ए क्लास कॉन्शियसनेस ता आमे काहे की बारंबार यूज करछे ना ए क्लास कॉन्शियसनेस माने कोन ना वी फीलिंग दैट वी बिलोंग्स टू रिच क्लास वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास वी बिलोंग्स टू लोअर क्लास सो जो वी फीलिंग ता होची क्लास कॉन्शियसनेस नाउ वी कम टू वी बैक टू आवर मेन concept that class struggle okay so in class struggle when class struggle started now when there is consciousness started we feeling started okay so ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ we feeling ମାନେ କଣ ଯେ ଆମେ okay in group ବା solidarity bond ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇଟା start ହେଇଥିଲା okay ତ again ଆଉ ଥରେ repeat କରିଦେବି जे क्लास स्ट्रगल स्टार्ट कौन पे ହେଇଥିଲା ନା क्लास स्ट्रगल started for class consciousness a class consciousness ର ମାଉରି self and class for itself so class in itself means what ना we belongs to a particular class ଯଦି ଆମେ କହିବା simply class ରେ ଆମେ discussion କଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ belong middle class ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ middle class we have many problems okay but we never raise our voice okay so ଆମେ ଜାଣିଛେ middle class average class means struggling class okay not very rich okay so we know that we are exploited by the system or take the example of lower class ଆମେ ଯଦି କହିବା poor class lower class so they are exploited they are deprived from the basic benefit of the government କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା economic power ଅଛି ନା political power ଅଛି so power is a very important concept in social stratification okay so they are deprived they are exploited ମୁଁ ଯେମିତି marginalized class ରେ କହିଥିଲି why they are exploited na because they are socially economically and politically they are weak ତ ସେଇଥିପାଇଁ they are exploited ତ similarly ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ lower class କହିବା okay ବା poor class କହିବା so always poor class is deprived exploited by the higher classes
କାହିଁକି ନା because of lack of power. Okay, so that is the main reason. And another thing is that ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ class consciousness ବା we feeling, so lower class ରେ ବହୁତ କମ ଥାଏ ସେଇଟା. Okay, because they are subsistence life. Okay, so they live for survival. So how to live, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର main intention. But if you discuss about the middle class, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ middle class in India, so middle class are conscious, they have we feeling. But another problem is what? Now they are not exploited, but they don't have power, political power or economic power. But the rich class people, upper class जो हमें कहोचे in the Indian society, they have all powers, economic power, political power, and social status also they have. So that is. So in class struggle, why the capitalists are exploitative? যদি ଆମେ class struggle discussion କରିବା capitalism रे by class रे, so why they are exploitative? Na because of their status. What? Na because of their economic, political, social status. So the workers, they have no voice, no choice. Why? Why they are, ଯଦି ଆମେ marginalized group ଆମେ discussion କରୁଥିଲେ ସେମିତି, so why they are marginalized or weaker section? Because they don't have any economic power, they don't have any political power, and they have no status, social status. So because of this reason, because of this issue of status, because of this power, because of wealth, because of prestige, the capitalists occupy the higher position, and the workers, they are exploited by the capitalist or industrialist ଆମେ ଯୋଉ କହିପାରିବୁ. So ଏ ଯୋଉ exploitation ହେଲା, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସବୁରେ ଗୋଟେ limit ଥାଏ. So ସେମିତି in this exploitation, when the exploitation exceed, then revolution started. तो जेहेतु आमे क्लास इन इंडिया डिस्कशन करूचे, so क्लास इन इंडिया रे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेतला, इट इज नॉट ओनली इन वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया रे भी हेतला. तो सेठी भी क्लास एमर्ज हेतला, आउ क्लास स्ट्रगल इंडिया रे भी हेछि. ओके, सो जो क्लास स्ट्रगल हैला कैपिटलिज्म रे बा इंडस्ट्रियल कंट्रीज रे, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन. So when exploitation increases, exceeds, then class struggle started. सबुठ important होची class consciousness. Okay, same terms sociologists differently ସେମାନେ explain करछन. जेमिति कहली इमाइल दुर्खिम solidarity कहछन्ती, same class conscious Karl Marx से यूज करछन्ती. Okay, the class consciousness means what? Na he belongs to the same class, middle class. Suppose there are, I mean, this is simple, any a problem or any exploitation kichhi hele, so first middle class people ही raise voice करते. Okay, with unity. Why? Now it is because of class consciousness that we are the belonging to middle class. The class consciousness is very important for a struggle or for the rights. तो ମୁଁ previously भी କହିଛି, ଯେତେ ବି movements ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, that is only for the rights. Okay, that may be women movement हो, বা dalit movement हो, বা backward caste movement हो, any movement. So any movement of why we fight? Now we fight for our rights and fight for our status. So that is main important thing. So similarly in class struggle also, when the workers, when the जो exploitations exit करिगला, so then they raise their voice. और इटा केमिति possible है? It is because of solidarity, because of class consciousness. Okay, so class consciousness in Karl Marx, he discussed about a class struggle. Okay, so in class struggle he discussed that class in itself and class for itself. So class in itself means what? Now we belongs to the same class. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି middle class ଗୋଟେ class. Okay, but ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି all are exploited हो, but all are deprived, but nobody raised their voice. But when they realize that the problem is same for all,
द प्रॉब्लम टा समस्त ପାଇଁ समान तो सेतବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଭଏସ ରେଜ କରନ୍ତି। फॉर एग्जांपल जदि आमे डे टू डे लाइफ रे देखिबा स्ट्राइक्स हुए ओके हड़ताल हुए ये सब कौन पे हुए ये सेतବେଳେ हुए जेतବେଳେ दे फील दैट the same class facing the same problem, that all people belongs to the class facing the same problem तो सेतବେଳେ आमे वॉइस रेज करछ। गोटे क्लास रे फॉर एग्जांपल जदि सपोज फॉर एग्जांपल आमे जे देखिबा बहुत सारा प्रॉब्लम छोटो एग्जांपल देबी फॉर एग्जांपल लाइक चिट फंड ओके सेटा तो हु आर हाउ दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट और जो प्रोटेस्ट है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम क्लास ओके तो सेही क्लास से माने प्रोटेस्ट कौन पे करले ना दे फेसिंग द सेम प्रॉब्लम ओके whatever may be the reason that is different but they are exploited and they are deprived and they feel that we belongs to the same class सेही पे से माने जाएगी प्रोटेस्ट करले तो सेही को हायर क्लास रिच क्लास आसी प्रोटेस्ट करने की मिडिल क्लास प्रोटेस्ट करने काहे की ना इट इज बिकॉज ऑफ the differences and because of class consciousness. Similarly, in capitalism, in industrial society, class struggle started. It is because of class consciousness. When they realize that the problem is same, okay, they belongs to the same class, but the problem is same. We all are exploited by the capitalistic system. We all are exploited by the capitalistic class or rich class. Okay. तो जितने समय when they feel when they realize then I would concept Marx कहते the class for itself so they fight for the class not for themselves. It's just clear class in itself means I think that I am only exploited by the system and ମୁଁ କିଛି କରି परिबिनी system against रे जाई परिबिनी but when we together when we feel that we are all then we will fight against the system. तो सेही पे class for itself केतल स्टार्ट होला ना when class consciousness started और class solidarity और we feeling started सेतले class for itself ହେଲା। so when class for itself means what ना fight for the class गोटे class रो betterment ପାଇଁ गोटे class रो welfare ପାଇଁ जेतला हम समस्त मिसिक स्ट्रगल करू सेतला हम देखु class for itself. So this is all about class consciousness. Okay. So हमें class रे बा गोटे class रो status enhance करिया पे हमको class consciousness is must. So dear learners, with these words, I will conclude my session. Okay. Today we discuss about we revise our previous classes. For examples like we discuss about marginalized classes. Then we'll discuss about what is class. Then we discuss about particularly we discuss about in Indian context that how class emerge in India both in rural societies and in urban societies. Then we discuss about class struggle, that how class struggle started in India. Okay, so in next classes we will continue with class and then we'll discuss about social mobility. So learners, if you have any doubt you can ask. Sir, what Yes. is life chances by Max Weber? What? What is life chances by Max Weber? Okay, life chances means what? Now suppose here I will discuss about class. Okay, so suppose we belongs to a particular class. Suppose I belongs to a rich class. Okay, if I belongs to a rich class means I will get all the facilities. So I will maintain my status. That is known as life chances means I have chance. Suppose my fathers are a rich person. Okay, so then I will get then I will get all the facilities. Suppose in case of education or whatever, I also gave the example of like Ambani. So Dhirubhai Ambani is the real means owner, but their sons are the owner of their class. So it means that if I belongs to a particular class, okay, so I have chances to maintain that status. So that is known as life chances. Yes, you- I understood. Are you Yes, I getting am my point? Yes, sir. Okay. So learners, any other doubt?
एक्सक्यूज मी सर yes सर काली आपण येसो 14 रो से व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड करवा लागि नंबर्स मागिथिले तो आमे हेटा देइथिलु बट सर किछि एमती नोटिफिकेशन आसेनी ओहो ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ନମ୍ବରରେ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେବି ओके सर आपण नंबर टा कहि परिबे ओके 9090 यस सर 9090 909035 हां सर देन 98 9090359845 ओके सर थैंक यू okay I will add okay Okay. so learners you have any other doubts सर हाँ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେଟା କଣ ଓ ସେଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଦଲିତ ମୁଁ ପଢଉଥିଲି ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କ୍ଲାସ ତ ସେଇଟା ହଉଥିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଫର ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଦଲିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଯୋଉ ହରିଜନ କହୁଛେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ କହିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋର सर yes ସେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ହଁ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ କଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟଟା ରିଲେଟେଡ ଟୁ କାଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଏମଏନ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ମାନେ କଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ମାନେ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କାଷ୍ଟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କାଷ୍ଟରେ ତମେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ଫିକ୍ସଡ ପୁରା ବଟ୍ ଏମଏନ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମହୀଶୂରର କୁର୍ଗ ଭିଲେଜରେ ତ ସେଇଠି ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ କଣ ନା ଲୋ କାଷ୍ଟ ମାନେ ବି ହାଇ କାଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ମାନେ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ସିଏ ଉପର କାଷ୍ଟକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ଅନୁସରଣ କରିକି ଓକେ ତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତିଆ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧର ସପୋଜ ଧର ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ସେମାନେ ନନଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଧର ଲିକର ପିଉଛନ୍ତି କି ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି କି ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଅଛି ବଟ୍ ହାଇ କାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କଣ ନା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଓମିଟ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସେମାନେ ହାଇ କାଷ୍ଟକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତିଆ ସେମାନେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଧୀରେ 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 କଣ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲୋ କାଷ୍ଟରୁ ହାଇ କାଷ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ମୋବିଲିଟି ନାହିଁ ବଟ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମସରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟକୁ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉପର କାଷ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବା ତ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ହଉନି ତ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ଏପଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ବା ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ନୁହଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି କିଛି ଲୋକ କିଛି ମାନେ କିଛି ସେକ୍ସନ ଅଫ ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲ କି ଏଇଟା ପସିବଲ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନୁହଁ ଓକେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଦର କାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ଯୋଉ ସେମାନେ ମାନଙ୍କର ଲୋ କାଷ୍ଟ ହାଇ କାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ହଉଛି ଏପଟେ ବି ମାନେ ସେମାନେ ତ ସେ କାଷ୍ଟରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଟାକୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିବ ନା ସେଇଟା କରିବନି ହଁ ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଆହୁରି ପସିବଲ କାହିଁକି ନା ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନସ ଓକେ ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯଦି କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ବୁଝିଲ କି ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ
Okay, through legal provisions it's possible, there are many provisions are there, तो हमें provision legally both legal provisions से हम change करी परिबे, but sanskritization is it little bit related to ruler, okay, traditional, तो ସେଇଠି ଆମେ ଆମ status को change करी परिबे. Okay. So any other doubts? Control E, your microphone is on. Control E, your mic. Control E, your camera is on. Learners, you have any other doubt? Control E, your microphone is on. So, Manoj sir, Yes sir. so thank you very much. I think no learners has any doubts further. I think Okay sir. no doubts, learners. So, should we close the class? Okay, thank you very much, Manoj sir. Thank you So sir. Welcome. tomorrow again same time you will join for the tomorrow class. Thank you very much, sir. Yes sir. Tab, tab, did not tab, tab, did not tab, remove tab, did not tab, remove tab, did not tab, remove the tab, show everyone tab, chat with every tab, did yourself tab, tab, turn off one tab, leave home one tab, turn off one tab, turn on cap tab, present now one tab, more off enter, expand, menu, more options button, enter, stop recording.